So I'm presenting my screen. Is it visible now? Tell me whether it is visible or not. Okay. So passing struct to function. A structure can be passed to any function from main function or from any sub-function. Structured definition will be available within the function only. It won't be able to other functions unless it is passed to those functions by value or by address. Else, we have to declare structure variable as global. That means structure variable should be declared outside the main function. So this structure will be visible to all the function in a C program. So it is very much, it is well-known thing. If we do not pass any variable into a function, then we cannot get access to this variable. So similar thing will happen here. If we do not pass any structure into a function, then we cannot access this variable. So there are many ways. There are different ways by which we can pass a structure into a function. It can be done in below three ways. What are the way? Number one, passing structure to a function by value. Number two, passing structure to function by address or reference. And number three, no need to pass a structure, declare structure variable as global. So that means call by value, call by reference, and global declaration. These three things we can do to pass a structure into a function. Okay. So example problem. So first example is passing structure to function by value. So the first point is passing structure to function in C by value. Okay. So in this problem, in this program, the whole structure is passed to another function by value. It means the whole structure is passed to another function with all members and their values. So this structure can be accessed from called function. This concept is very useful while writing very big program in C. Look, this is quite simple. Uh, Here is the structure definition. This structure definition consists of three fields: ID, name, and percentage. Integer type ID, character type name, and float percentage. Now, students, look. This is the declaration of the function func. Look this declaration very carefully. The return type of this function is void. Okay, and the passing argument type is struct student record. Struct student record. Here, struct student is the type, passing argument type. Okay, no need to write this record here. This is unnecessary writing. You may or may not write this variable name here. Okay, just you need to mention the data type name, struct student. So by using this declaration here, we want to ensure that when this function func is called, then we take a structure type variable as an argument. Then we take a structure type variable as an argument to this function, and this function does not return anything. That is why here void is written. Okay, so this is the declaration of this function. Getting it, students?
here in this line, what is the meaning of this line? Hmm, hmm. Next, inside in main function, just see, the variable is created, record, namely record. So this is a single variable. That means by using this program, only a single record is to be maintained, is to be handled. Okay, so this is a single variable, start student record. Then this is the initialization part. Record.id is equals to 1, strcpy record.name equal to Raju, record.percentage equal to 86.5, like this. Now look how this variable record is got passed into this function. This is the function calling statement, func, then within the bracket record. By writing this, actually here this record variable got passed into this function. Okay, so program control transferred to this calling function to the called function. This is the function calling statement, and this is the function definition. So it directly jumps to this statement to here, and it takes the value, all the value of this variable record. And look, this, all these values are stored in this dummy variable record here. This is the definition of the function func, and this is the header of this function func. Okay, so whatever the values is passed from here, it actually got stored in this variable record. This is the dummy variable. Okay, now look, directly we can access the id part, the name part, or the percentage part. We can directly access all these things: record.id, record.name, record.percentage. Getting it? But what is the problem with this approach? If you manipulate, if you change any record, if you change any field of this variable, that it does not reflect in the actual variable. That means अगर तुम यहाँ पे ये डमी वेरिएबल के साथ कोई चेंज करते हो, या मान लो कि record डॉट id जो 1 है उसको तुम चेंज करके तुम यहाँ पे 15 कर दिए, उसके बाद फिर अगर जब प्रोग्राम कंट्रोल वापस जाएगा मेन फंक्शन में, then it does not reflect on this variable. These two variables are different actually, record and record. यहाँ पे दोनों का नाम सेम है, वेरिएबल दोनों का नाम सेम है, बट these two variables are in different location, are in two different memory location. So any query, any confusion with this approach? Okay. हाँ हाँ बोलो, कौन सा जगह? ये यहाँ पे, अच्छा फिर से बताते हैं, सुनो क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करके उस पे सारा जो फील्ड्स है वो सारे फील्ड्स को यहाँ पे लिया जा रहा है। उसके बाद ये मेरा फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट है, फिर मेन फंक्शन का डेफिनेशन है। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। कैसा वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है ये रिकॉर्ड, ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। मतलब एक ऐसा मेमोरी लोकेशन बना है यहाँ पे जिसपे मेरा 3 पार्टीशन है, एक है आईडी पार्टीशन, दूसरा है नेम पार्टीशन, तीसरा है परसेंटेज पार्टीशन। ओके, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे डायरेक्टली रिकॉर्ड डॉट आई डी इक्वल टू 1 स्टोर कर दिए, रिकॉर्ड डॉट नेम पे राजू रखे, और रिकॉर्ड डॉट परसेंटेज में परसेंटेज स्टोर की 86.5। उसके बाद देखो फंसी रिकॉर्ड, इसका क्या मतलब है, इस लाइन से फंसी फंक्शन का एक्चुअली कॉलिंग हो रहा है, फंसी फंक्शन का इन्वोकेशन हो रहा है, और वो आर्गुमेंट के तौर पे यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, आर्गुमेंट के तौर पे जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं रिकॉर्ड बोल के, उसको हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो एंटायर थिंग, द एंटायर वेरिएबल गॉट पास्ड इनटू दिस फंक्शन। मतलब एंटायर वेरिएबल, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल रिकॉर्ड जो है उस पे मल्टीपल पार्टीशंस है, तो सारे पार्टीशंस के साथ द एंटायर थिंग, द होल थिंग गॉट पास्ड इनटू दिस फंक्शन। ओके, and to accept the variable, to accept the entire thing, here this dummy variable is used। यहाँ पे दोनों का नाम
सेम लिया गया है, यहाँ पे भी रिकॉर्ड पास हो रहा है, यहाँ पे भी डमी वेरिएबल का जो नाम है वो भी रिकॉर्ड लिया गया है, तुम डिफरेंट भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग पास कर सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल को, इस तरीके से हम लोग कॉल बाय वैल्यू के मेथड से, कॉल बाय वैल्यू के अप्रोच से पास कर सकते हैं। देन आफ्टर वी कैन डिस्प्ले द, वी कैन एक्सेस द डिफरेंट पार्टीशंस, डिफरेंट फील्ड्स। देखो रिकॉर्ड डॉट आईडी को प्रिंट किया जा रहा है, रिकॉर्ड डॉट नेम प्रिंट किया जा रहा है, रिकॉर्ड डॉट परसेंटेज प्रिंट किया जा रहा है, तो ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्प्लेड। गेटिंग इट? Any other student, any query, any doubt? Okay, so the next approach is call by address or call by reference. In this program, the whole structure is passed to another function by address. देखो हम लोग call by reference और call by address already पढ़ चुके हैं. So what is call by reference? कोई बताएगा मुझे what is call by reference? I have already discussed the concept call by reference. Students, address of the variable is passed. Address of the variable is passed. Instead of the value of the variable in call by reference, address of the variable is passed into the function. So here also this thing can be done. In this program, the whole structure is passed by another function by address. It means only the address of the structure is passed to another function. The whole structure is not passed to another function with all members and their values. So this structure can be accessed from call by function by its address. मतलब हम लोग जैसे कॉल बाय रेफरेंस यूज करते थे पहले, वैसे ही यहाँ पर भी कॉल बाय रेफरेंस यूज कर सकते हैं। वेरिएबल के एड्रेस को पास करके हम लोग कॉल बाय रेफरेंस के जरिए डिफरेंट जो मेंबर्स हैं, डिफरेंट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग दिस थिंग आई वांट टू शो some different, just a minute.
फ्रेंड्स, सोचो कि मैं एक स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल ले रहा हूं जिसपे मेरा 3 पार्टीशन है, मतलब तीनों सेगमेंट है, तीनों फील्ड्स है. द फर्स्ट सेगमेंट इज नेम, second one is role, and third one is marks. So when when I create this variable, then I need to write in this way: struct student s. बताओ s यहाँ पे क्या है? What is s here? What is the significance of s here? Struct student s. By writing this, before it, I've already declared. Just consider I have already declared the structure definition of student before it, and then after I am writing struct student s. Then what is s here, students? What is the significance of s? Yes, structure type variable. That means, yes, that means I can we can say that this s is the name of this variable. Okay, just consider this variable and its name is s. Okay. Now, after creating this variable, we can access all this partition with respect to the name of this variable. How? How can we access all the partitions with respect to this name? Suppose I want to access this role partition and want to store 5 here. How can I do this? Yes, I need to write s dot role is equals to 5. Very good. Look, students, in this variable, there is some memory address, isn't it? Suppose 1010 is the memory address of this variable. Just consider this 1010 as the memory address of this variable. Okay. So देखो यहाँ पे हम लोग इस मेमोरी एड्रेस के थ्रू भी, मेमोरी एड्रेस के जरिए भी हम लोग डिफरेंट पार्टीशंस को एक्सेस कर सकते हैं. मतलब एक स्ट्रक्चर टाइप ब्लॉक का जो पार्टीशंस होता है, उन सारे पार्टीशंस को हम लोग दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. नंबर 1 with respect to the name of the block, number 2 with respect to the address of the block. ओके, सो नेम के जरिए एक्सेस करने के लिए हम लोग को कौन सा ऑपरेटर चाहिए होता है? दिस डॉट ऑपरेटर इज नीडेड. बट व्हेन वी wish to access the members with respect to the address, then we have to use the arrow operator or alias operator. Let's see. Ampersand s, by writing ampersand s, we can obtain the address of this variable. With respect to this address, if we wish to access any partition, suppose marks partition I want to access and want to store 75 here, then I need to write ampersand s arrow. ये एरो ऑपरेटर जो है, एरो ऑपरेटर कीबोर्ड से कहां से मिलेगा? एरो ऑपरेटर को दो सिंबल से मैं यहाँ पे क्रिएट किया. देखो, एक है तुम्हारा डैश, उसके बाद ये ग्रेटर देन सिंबल, डैश फॉलोड बाय ग्रेटर देन सिंबल. So this is altogether these two symbols make a operator, arrow operator or alias operator, and followed by the partition name. Getting it? This is very important. This is very important and very interesting. Just see it carefully and tell me, you understand or not? तो मैं रिपीट करता हूं एक बार.
हम लोग जब कभी भी कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल लेते हैं, वो स्ट्रक्चर का जो डिफरेंट पार्टीशन होता है, वेरिएबल का जो डिफरेंट पार्टीशन होता है, उन सारे पार्टीशंस को हम लोग दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. There are two ways to access these partitions. Number one, with respect to the name of the variable, and number two, with respect to the address of the variable. Okay. So when name of the variable यूज होता है, जब नेम ऑफ द वेरिएबल के थ्रू हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, तब ये डॉट ऑपरेटर हम लोग वो चीज कर लेते हैं, एज डॉट रो. But when we wish to access the partition with respect to the address of this block, then we need to use this particular operator. This operator is known as alias operator or arrow operator. Getting it? Any query? Any doubt? No, this statement actually get access this partition. This statement actually gives access to this partition, marks partition. You can access this location actually. Suppose you want to store 75 here. You can write here percentage arrow marks equal to 75 in this. It does not give you the address of this particular field, particular block. ये जो है ये एक्चुअली तुमको उस लोकेशन को एक्सेस दिलाता है, उस लोकेशन का एक्सेस दिलाता है, इस लोकेशन का एक्सेस दिलाएगा, एड्रेस नहीं दिलाएगा. मतलब वहां पे अगर कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू को तुम पा सकते हो, यू मे गेट द वैल्यू. दैट मीन्स अगर तुम अगर ऐसे लिखते हो एम्परसेंड मार्क्स इज इक्वल्स टू plus 75. So if you write in this way, ampersand ace arrow marks is equals to ampersand ace arrow marks plus 5 plus 5. देन क्या होगा, ये ampersand ace arrow marks एक्चुअली इस जगह का वैल्यू बताएगा, ये जगह को एक्सेस करेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू को ऑब्टेन करेगा. प्लस 5 मीन्स उस वैल्यू के साथ 5 ऐड हो जाएगा. then this updated value will be stored in this particular location. ampersand ace arrow marks, ampersand ace arrow marks मतलब ये वाला पार्ट. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ. Any doubt, any query up to this? अच्छा, यहाँ पे मान लो कि ये नेम जो है, नेम एक एरे है, नेम एरे है 10 साइज का. रोल ये कैरेक्टर टाइप एरे है ऑब्वियसली. नेम मेरा रोल जो है वो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है. मार्क्स जो है वो एक फ्लोट टाइप वेरिएबल है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द साइज ऑफ दिस वेरिएबल? 16. 4 plus 2 16. It will be 16. Good. Now just consider it is. Now just consider I'm taking a pointer, the structure type pointer. So how can I declare this structure type pointer? What I need to write? क्या लिखना पड़ेगा मुझे स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर लेने के लिए?
देखो जैसे इंटीजर पॉइंटर हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे, फ्लोट पॉइंटर ले रहे थे, कैरेक्टर पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे थे, वैसे स्ट्रक्चर पॉइंटर भी तो ले सकते हैं ना. Like other data types, we may have some structure pointer. Structure is also a data type. It is a user defined data type. है कि नहीं? स्ट्रक्चर के लिए भी हम लोग पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं. तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? वेरी गुड. स्टूडेंट स्टार पॉइंटर का नाम एक्स. मुझे बताओ ये जो पॉइंटर मेरे पास बनेगा, ये पॉइंटर का साइज कितना होगा? इस पॉइंटर का साइज कितना होगा? कितना बाइट का होगा? इस वेरिएबल का साइज कितना होगा? एक्स. एक्स जो वेरिएबल है मेरे पास, एक्स जो वेरिएबल बनेगा मेरे पास, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मतलब उसका मेमोरी एलोकेशन कैसे बनेगा? उसमें भी मेरा 3 पार्टीशन होगा, है ना? उसमें भी 3 पार्टीशन रहेगा मेरा. फर्स्ट पार्टीशन में क्या रहेगा, क्या स्टोर रहेगा? इन दिस फर्स्ट पार्टीशन क्या स्टोर रहेगा? बोलो. आप लोग हो मीटिंग में, लीव कर गए भाई? नेम. नेम रहेगा सिर्फ. पॉइंटर है तो ये एक्स तो एक पॉइंटर है मेरा. तो एक्स में क्या रहेगा? एक्स मतलब ये जो फर्स्ट पार्टीशन होगा, फर्स्ट पार्टीशन में क्या रहेगा? नेम वेरिएबल का एड्रेस रहेगा. इसमें क्या रहेगा? रोल वेरिएबल का एड्रेस होगा. इसमें क्या होगा? मार्क्स वेरिएबल का एड्रेस होगा, है ना? बोलो बोलो बोलो, क्या क्या बोल रहे थे, कौन क्या बोल रहे थे, बोलो. मुझे सुनाई नहीं दिया. बोलो बोलो बोलो. So when we are taking this pointer of any particular structure type, then there is a proper definition of the structure, na? Then the structure type variable, then this with the help of this definition, it can ensure that this much partitions are required, depending on the by seeing the definition of the structure, isn't it? No, it is not correct actually. When we are taking any structure, when we are taking any pointer, then only a single partition is, only a single variable is allocated. And for each and every structure, it may be integer type, it may be float type, it may be character type, or it may be any structure type. The size of this variable is same, 2 bytes. 2 bytes. Remember this thing. एक्चुअली ये स्ट्रक्चर पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर किस लिए हम लोग लेते हैं बताओ तो? टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. अच्छा, एक बात बताओ सुदेश ना, तुम रहते हो एक तुम्हारा घर कहाँ पे है बताओ? एड्रेस बताओ तुम्हारा. दुर्गापुर. दुर्गापुर में तुम रहते हो, ठीक है, वेरी गुड.
अब दुर्गापुर में तुम से बी जोन में रहते हो, बी जोन में से कोई क्वार्टर में रहते हो, ठीक है। तो तुम्हारा एड्रेस लिखने के लिए जो नेम प्लेट चाहिए होगा, वो नेम प्लेट में तुम्हारा एड्रेस पूरा लिखा रहेगा, नेम ऑफ योर हाउस, योर हाउस नंबर, योर स्ट्रीट नंबर, your area, your pin code, like this. All these things should be written there in your nameplate or your address plate. Now, suppose someone is residing in Mumbai. Someone is residing in Mumbai, और उसका एड्रेस जो है, वो एड्रेस लिखने के लिए भी मुझे एक नेम प्लेट चाहिए। तो जो नेम प्लेट का जो साइज होगा, नेम प्लेट का साइज क्या डिपेंड करेगा कि हाउस के ऊपर वो हाउस कहाँ पे है, या फिर हाउस कितना बड़ा है उसके ऊपर। मैं रहता हूँ छोटा सा घर में, मैं रहता हूँ छोटा सा घर में, एक कमरे का घर है मेरा, तो उसका एड्रेस मुझे लिखना है, उस घर का एड्रेस मुझे लिखना है कहीं पे, किसी एड्रेस प्लेट में मुझे लिखना है। और कोई एक जन रहता है, उसका मतलब बड़ा सा एक मकान है, बहुत बड़ा सा एक मकान पे कोई रहता है, तो उसका भी एड्रेस मुझे लिखना है नेम प्लेट में। तो नेम प्लेट का जो साइज होगा, नेम प्लेट का साइज डिफरेंट होगा। मेरा छोटा हाउस है इसलिए मेरा छोटा नेम प्लेट लगेगा, किसी का बड़ा हाउस है उसका बड़ा नेम प्लेट लगेगा, ऐसा है, ऐसा ऐसा जरूर जरूर पड़ेगा। टेल मी। So just consider this pointer as a name plate और एड्रेस प्लेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एड्रेस रखेंगे ना हम लोग किसी वेरिएबल का, तो इसका साइज हर एक वेरिएबल के लिए सेम होता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो स्ट्रक्चर टाइप। यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल का साइज मेरा टोटल कितना बाइट हुआ, 10 प्लस 4 प्लस 2 16 बाइट हुआ। 16 बाइट का एड्रेस, 16 बाइट का ब्लॉक है, ये वेरिएबल है, तो इसका एड्रेस रखने के लिए जो पॉइंटर लिए हम लोग, उसका साइज 2 बाइट होगा। सिमिलरली अगर हम लोग कोई इंटीजर टाइप वेरिएबल लेते हैं, उसका एड्रेस मुझे रखना है, तो इंटीजर टाइप पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। देन दिस इंटीजर टाइप पॉइंटर वेरिएबल कैन आल्सो ऑफ टाइप 2 बाइट्स, टेक्स 2 बाइट्स। फ्लोट टाइप पॉइंटर अगर होगा, उसका भी साइज होगा 2 बाइट्स। कैरेक्टर टाइप पॉइंटर अगर होगा, उसका भी साइज होगा 2 बाइट्स। गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? गेटिंग इट? Now just see what I'm doing. I'm writing x is equals to ampersand is। क्या होगा बताओ? x वेरिएबल में क्या स्टोर होगा बताओ? वेरी गुड, 1010 इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। मतलब ये पॉइंटर अब इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर वी कैन एक्सेस this different partition of this variable. Now tell me what contain this variable x actually. It is address, and with respect to address, if we wish to identify the different partitions or the different segments, then which operator is used? कौन सा ऑपरेटर? हाँ, ये अलाइज ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर हमको यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर मैं इस x के जरिए अगर मैं रोल में या मार्क्स को एक्सेस करना चाहूं, then how can I write this? I just want to write x arrow roll is equals to 6, like this. X arrow marks is equals to 78. So understood, student? What is structure? What is structure pointer? And how can we access the different partition of a structure pointer? How can we access the different partition of a structure with the help of the structure pointer? Any query? Understood, na? Everyone? Huh. So this thing actually we required when we use call by reference concept in this structure. Let's see. So passing passing structure into a function by address.
by address. That means by call by reference. Just see the example. The same example is here. This is the definition of the structure. ID, name, and percentage of the fields. And this is the declaration of this function func. The return type is void, and the passing argument type. Look, the passing argument type is struct student star. Struct student star. That means when this func function is getting called, then a address will be passed. That is why there it is written start student star. Now this record variable is created inside in this main function. Record ID is equals to 1, record name is equals to Raju, record percentage equal to it is 6.5. Now look, when this variable is get passed into this function, instead of value there is passed the ampersand of record. Ampersand of record क्या मतलब है? What is the meaning of ampersand record? क्या पास होगा यहाँ से? एड्रेस पास होगा. गुड. रिकॉर्ड वेरिएबल का एड्रेस पास होगा. तो उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? यहाँ पे एक पॉइंटर चाहिए. देखो ये पॉइंटर यहाँ पे लिया गया है स्टार रिकॉर्ड. नाम सेम लिया गया है लेकिन नाम डिफरेंट भी हो सकता है. स्टार स्टूडेंट स्टार रिकॉर्ड. अब इस पॉइंटर के थ्रू अगर हम लोग एक्सेस करना चाहें डिफरेंट पार्टीशंस को, डिफरेंट मेंबर्स को, देन आई कैन यूज दिस एरो सिंबल, दिस अलाइज सिंबल, record arrow ID, record arrow name, record arrow percentage in this way. Getting it, students? Any query, any doubt? हेलो. अच्छे से देखो इसको, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग अभी और भी प्रोग्राम करेंगे. स्ट्रक्चर पॉइंटर मतलब स्ट्रक्चर को कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू पास करके जो कॉन्सेप्ट सीखे, इसके ऊपर अभी हम लोग और प्रोग्राम करेंगे. मतलब स्ट्रक्चर टाइप एरे को लेके हम लोग प्रोग्राम किए थे. अब उस एरे को कैसे पास करेंगे वो हम लोग देखेंगे. वो इस कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू करेंगे. ठीक है. एंड द नेक्स्ट अप्रोच इज एज अ ग्लोबल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल का तो पता है हम लोगों को. अगर कोई वेरिएबल को हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं तो उसको पास करने की जरूरत नहीं है. We can direct access this variable inside any function in our program. So here this record variable is declared as a global variable, and we can access this record variable inside in main function. And when we call this struct demo function, then we need not to pass any variable, this record variable inside this. We can directly access this variable here, record.id, record.name. So look here, record variable is the global variable. It is declared outside of this main function. मैं बताया था आप लोगों को लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल के बारे में. हाँ, स्टोरेज क्लास, ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न बताया था ना मैंने. This record variable is a global variable or external variable. So in any function it can be accessed directly. It can be accessed. So this is how a structure variable can pass into a function. Now we will see how can we pass an entire structure type array into a function. Okay. So this is the program. ये प्रोग्राम शायद कल मुझे कोई स्टूडेंट भेजा था, उसको मैं रेक्टिफाई कर रहा था. ये कौन भेजा था मुझे लास्ट जो कौन नाम बताओ.
नहीं नहीं, नेहा के बाद भी कोई नेहा को तो दिखाया मैंने, नेहा का प्रोग्राम ये वाला है, ये वाला प्रोग्राम नेहा का है। ये भी काम कर रहा है और ये भी। नेहा के बाद और एक कोई मुझे भेजा था, रिम्पा शायद। रिम्पा आर यू देयर? तुम्हें पठाओ ना, शामी भेजी नहीं। ঠিক ঠিক তুমি ভেজো ভেজো নি। ওকে ঠিক আছে, চলো নেক্সট। তাহলে এই प्रोग्रामটাকে আমরা मॉडिफाई करी, ये वाला प्रोग्राम को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, मतलब ये इस प्रोग्राम का क्या काम था, इस प्रोग्राम में एक पोजीशन पे हम लोग एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं। मतलब ये असाइनमेंट में आप लोगों को दिया था, सिर्फ 25 जन 26 जन ही किए हो, लेकिन तो देखते हैं इसको कैसे एक एरे में स्ट्रक्चर टाइप एरे को कैसे पास करते हैं एक फंक्शन में। तो कौन सा ऑपरेशन को करे, इंसर्शन वाला करे या फिर डिस्प्ले वाला करे या इनपुट लेने वाला करे, एक दिखा देते हैं, बाकी आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, लोग, this is the declaration of the structure, this is the creation of the array, those are the variables in I position, enter the number of student, after asking for the number position number, then enter the records of the students, this is the input section. After that, this is the insertion logic, this is the logic for insertion, and this is the display. तो बताओ स्टूडेंट्स, कौन सा वाला करके दें, इनपुट वाला? चलो ये इनपुट सेक्शन को हम लोग एक फंक्शन के थ्रू बनाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया, फंक्शन का डिक्लेरेशन किया, नाम है इनपुट, रिटर्न टाइप लिया मैंने वॉइड, और पासिंग आर्गुमेंट टाइप मैंने यहाँ पे लिया स्ट्यू स्टार। मतलब इनपुट फंक्शन को जब हम लोग कॉल करेंगे तब एक ये स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर को, सॉरी स्ट्रक्चर टाइप का एड्रेस को हम लोग पास करेंगे इनपुट फंक्शन में। ओके, सो इनपुट फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते हैं, उसके बदले में यहाँ से सिर्फ इनपुट फंक्शन का कॉलिंग करते हैं। इनपुट क्या पास करेंगे बताओ? मुझे इंटायर एरे को पास करना है इनपुट फंक्शन में। तो एरे को, इंटायर एरे को हम लोग कैसे पास करते हैं फंक्शन में? हाउ कैन वी पास द इंटायर एरे, इंटीजर टाइप एरे हो या फ्लोट टाइप एरे हो, कैसे पास करते हैं? पासिंग एरे इनटू अ फंक्शन पढ़ाया था ना मैंने। हाउ टू पास, हाँ, we need to pass the base address of the array, we need to pass the first address of the array, that means ampersand is 0 पास करना होगा। और क्या चीज लेना पड़ेगा कि कितना ब्लॉक मुझे एक्सेस करना है एरे में से, मतलब इनका वैल्यू देना पड़ेगा, ये दो चीज मुझे पास करना होगा। स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ?
प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? हेलो, मुझे बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ मुझे। तुम अगर नहीं बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। Are you getting this function calling statement input? इनपुट फंक्शन में क्या क्या चीज पास की हम लोग? एरे का बेस एड्रेस को पास किए, और कितना ब्लॉक मुझे एक्सेस करना है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, इनको पास किया। अब इनपुट फंक्शन का डेफिनेशन को लिखेंगे यहाँ पे। कितना आर्गुमेंट आ रहा है इनपुट में, इस फंक्शन में? कितना पासिंग आर्गुमेंट आ रहा है? कितना पासिंग आर्गुमेंट ले रहे हैं यहाँ से हम लोग, मेन फंक्शन से? How many passing argument I have taken in this input function? Two, yes, two. The first argument is an address of a structure, address of a structure type array. So in order to accept this address, what I have to declare here? What I have to take here? स्ट्रक्चर टाइप एक एड्रेस आ रहा है यहाँ से, मेन फंक्शन से, तो उसे मुझे एक्सेप्ट करना है। क्या चाहिए मुझे? पॉइंटर चाहिए, स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर चाहिए, एस क्यू स्टार एक्स। और क्या आ रहा है? एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है। उसको स्टोर करने के लिए तो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ही सफिशिएंट है, int n। नाउ लेट्स सी how can I access the entire array with the help of this pointer type variable x. Okay, so first इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। So in this function, at first I'm taking a loop variable I, and after enter the record of the students। उसके बाद फिर लूप चलाएंगे for I equals to 0, I less than n, I plus plus। फर्स्ट मुझे क्या चीज को इनपुट लेना है? नाम इनपुट लेना है। अच्छा, उसके बाद क्या इनपुट लेना है? रोल नंबर इनपुट लेना है और मार्क्स इनपुट लेना है। मतलब यहाँ पे गेट्स फंक्शन में नाम इनपुट होगा मेरा, और इस स्कैनफ फंक्शन के थ्रू मेरा नेम और रोल नंबर इनपुट होगा। मुझे बताओ कि यहाँ पे गेट्स फंक्शन में क्या लिखा जाएगा? इस एक्स पॉइंटर के थ्रू मुझे एंटायर एरे को एक्सेस करना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा मैं? एक्स में क्या स्टोर है ये बताओ पहले। एक्स में क्या चीज स्टोर है? द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। यस, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। तो अगर मैं यहाँ पे लूप के अंदर x प्लस आई लिखता हूं, तो मैं एक एक करके ब्लॉक का, डिफरेंट ब्लॉक्स का एड्रेस को ऑब्टेन कर पाऊंगा कि नहीं? x प्लस 0 जब होगा तब मुझे फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा, फिर x प्लस 1 जब होगा नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा, x प्लस 2 थर्ड ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा, एंड सो ऑन। So by writing x plus I, we can obtain all the addresses of different blocks of the array। हाँ कि नहीं बताओ? x प्लस आई लिखेंगे तो डिफरेंट ब्लॉक का एड्रेस एक के बाद एक आएगा कि नहीं?
अब उस एड्रेस के थ्रू मुझे पार्टीशन को एक्सेस करना है। पार्टीशन का क्या नाम है? नेम। नेम इज द नेम ऑफ द पार्टीशन, इजंट इट? नेम ऑफ द फर्स्ट पार्टीशन। फिर मुझे एक्सेस करना है बाकी दोनों पार्टीशन को। सेकेंड पार्टीशन का नाम क्या है बताओ? रोल। और थर्ड पार्टीशन का नाम है एम। एनएफ %d दोनों इंटीजर टाइप का डेटा है। % x प्लस आई एरो रोल कॉमा % x प्लस आई एरो मार्क्स। बस हो गया। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं यहां से क्या पास कर रहा हूं? मेन फंक्शन से मैं पास कर रहा हूं एरे का जो बेस एड्रेस है वो, और मेरा नंबर ऑफ ब्लॉक, कितना ब्लॉक को मैं लेना चाहता हूं, एक्सेस करना चाहता हूं वो। ठीक है। उसके बाद मैं जो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया, उस फंक्शन में मैंने बेस एड्रेस को कॉपी करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, और नंबर ऑफ ब्लॉक को एक्सेप्ट करने के लिए एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब मुझे इनपुट लेना है, एंटायर एरे में मुझे वैल्यूज इनपुट करना है। तो इनपुट करने के लिए, एरे में इनपुट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? लूप चाहिए होता है। तो वही लूप मैंने यहाँ पे यूज किया, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। अब लूप के चलते हर एक एरे टाइप ब्लॉक मैं एक एक करके एक्सेस करूंगा। तो देखो कैसे एक्सेस होगा। मुझे तो सिर्फ पता है फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस। अगर मुझे सारा ब्लॉक का एड्रेस ऑब्टेन करना है एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, देन आई हैव टू राइट x प्लस आई हियर। x प्लस 0 जब होगा तब फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस आएगा, x प्लस 1 जब होगा तब सेकंड ब्लॉक का एड्रेस आएगा, x प्लस 2 होने पर थर्ड ब्लॉक का एड्रेस आएगा। ऐसे सारा ब्लॉक का एड्रेस में एक के बाद एक एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे। और सिर्फ एड्रेस को एक्सेस करने से तो काम नहीं बनेगा ना, उस एड्रेस के थ्रू उस ब्लॉक का जो डिफरेंट पार्टीशन है, मतलब नेम पार्टीशन, रोल पार्टीशन या फिर मार्क्स पार्टीशन, उन सब पार्टीशन को भी मुझे एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे वो? एड्रेस के थ्रू अगर पार्टीशन को एक्सेस करना है तो एरो ऑपरेटर लगाएंगे, x प्लस आई एरो रोल, x प्लस आई एरो एम, x प्लस आई एरो नेम। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कम्युनिकेट। सिर्फ यस सर नहीं, समझ में आया कि नहीं बताइए। अच्छे से देखो इसको, बहुत ट्रिकी है, बहुत नहीं थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुम लोग जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, ये बहुत काम में आएगा। मतलब पूरा चीज इसी के ऊपर है। बोल सकते हो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब इनिशियल में ऑलरेडी कर चुका हूं, आप लोग को समझा चुका हूं। इनिशियल पार्ट है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इसी के थ्रू होगा। समझे किस तरीके से हम लोग एरे को पास करते हैं, स्ट्रक्चर टाइप एरे को एक फंक्शन में पास करते हैं। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? हाँ, एनी क्वेरी क्वेश्चन? हाँ हाँ बोलो। हम्म। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। कौन हो भाई, नाम क्या है तुम्हारा? शुभम। शुभम, थैंक यू थैंक यू। देखो शुभम ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। शुभम पूछ रहा है कि सर यहाँ पे आप एम्परसेंड सिंबल क्यों दिए? यहाँ पे x प्लस आई तो खुद ही एक एड्रेस है। एक से बेस, एक जो वेरिएबल है वो मेरा बेस एड्रेस को स्टोर कर रहा है। x प्लस आई करने पर मुझे रिमेनिंग ब्लॉक्स का एड्रेस मिल रहा है एक एक करके। तो x प्लस आई तो एक एड्रेस ही है, आप उसके पहले एम्परसेंड क्यों दे रहे हैं? देखो यहाँ पे आंसर है ये कि एक्चुअली x प्लस आई मेरा एंटायर ब्लॉक का एड्रेस है। एरो रोल कर रहे हैं तो उस एड्रेस के थ्रू हम लोग रोल नंबर पार्टीशन को एक्सेस कर रहे हैं।
अब मुझे उस रोल नंबर पार्टीशन में वैल्यू स्टोर करना है, तो उस रोल नंबर पार्टीशन का जो एड्रेस होगा, जो अलग से एड्रेस होगा, उस एड्रेस को मुझे यहां पे पाना है, ऑब्टेन करना है. दैट इज वाई दिस एम्परसेंड सिंबल इज टेकन. एक्चुअली इसको अगर तुम इस तरीके से लिखते हो तो और थोड़ा अच्छा समझ में आएगा. एंटर में ब्रैकेट देता है. थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. अच्छा शुभम, देखो ये 1010 जो एड्रेस है ना, ये 1010 एड्रेस मेरा एंटायर ब्लॉक का है, मैं ऐसा बोल रहा था, है ना. लेकिन ये 1010 तुम्हारा ये जो एंटायर वेरिएबल है, एंटायर वेरिएबल का फर्स्ट बाइट का एड्रेस है, पता है. ये तुम बताओ कि इस एंटायर वेरिएबल का साइज कितना बाइट का है, कितना बाइट का है इंटर वेरिएबल का साइज कितना बाइट है. 10 प्लस 4 प्लस 2 16 बाइट है. तो फर्स्ट बाइट का एड्रेस है यहाँ पे 1010, याद रखना 1010. 1010 से लेके 10 बाइट, नेम वेरिएबल का साइज कितना है, 10 बाइट्स. तो 10 memory addresses are occupied for this array. So 10, 10, 10, 11, 10, 12, 10, 13, 10, 14, 10, 15, 10, 16, 10, 17, 10, 18, 10, 19. So 10, 10 to 10, 19, these memory addresses are occupied for this array. Okay. Next, 10, 20, रोल वेरिएबल का साइज कितना होता है, कितना है यहाँ पे, रोल जो पार्टीशन है इसका, इस पर्टिकुलर लोकेशन का साइज कितना है, समझ में नहीं आ रहा है. 2 है. बोलो, वही तो पूछ रहा हूं मैं, 2 है. तो 1020 1020 और 1021, ये दोनों मेमोरी एड्रेस इस रोल वेरिएबल के लिए ऑक्युपाइड है. ओके. और मार्क्स वेरिएबल का साइज कितना बाइट का है, सिमिलरली 4 बाइट का है. तो बता पाओगे, तो इस मार्क्स के लिए कौन कौन सा मेमोरी एड्रेसेस ऑक्युपाइड है. एग्जैक्टली 22, 23, 24, 22, 23, 24, 25, 22 से लेकर 25 तक, ये चारों बाइट इस मार्क्स वेरिएबल के लिए है. तो देखो, जब हम लोग यहाँ पे एम्परसेंड, सॉरी, एक्स प्लस आई एरो रोल लिख रहे हैं ना, तो एक्स प्लस आई एरो रोल लिखने पर एक्चुअली इस ब्लॉक का वैल्यू हम लोग पा सकते हैं, एक्स प्लस आई एरो रोल लिखने पर. लेकिन मुझे जब स्कैनफ के थ्रू वैल्यू यहाँ पे स्टोर करना है, तो आई हैव टू मेंशन द एड्रेस है. तो उस एड्रेस क्या है, वो एड्रेस क्या है, 1020. ये 1020 को मुझे ऑब्टेन करना है वहां पे. दैट इज व्हाई दिस एम्परसेंड सिंबल आई हैव गिवन. गेटिंग इट शुभम. सिमिलरली एम्परसेंट एक्स प्लस आई एरो एम यहाँ पे भी है. और कोई क्वेरी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू. ये मुझे डिस्कस करना चाहिए था, पूछने से पहले ही डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन शुभम ने पूछा, थैंक यू. और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अच्छे से समझे. इसको रन करते हैं. एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, से 3. पोजीशन फॉर न्यू स्टूडेंट, ये एक्चुअली बाद में लेना था, ठीक है पहले ही ले लेते हैं.
मतलब सेकंड, मतलब 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैं पहले इंसर्ट करूंगा और सेकंड पोजीशन पे एक नया स्टूडेंट का रिकॉर्ड को, मतलब 3 स्टूडेंट को लेके एक एरे बनाऊंगा, फिर सेकंड पोजीशन पे न्यू स्टूडेंट को इंसर्ट करूंगा। ये है पोजीशन, इसके यहाँ पे 2 दिया जा रहा है 2। अब ये एरे का वैल्यूज पूछ रहा है मुझसे। एंटर द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट का नाम मैं ले रहा हूँ ए, रोल नंबर एंड मार्क्स। फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, मार्क्स मिला है 78। एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये एक्चुअली सेकंड स्टूडेंट के लिए पूछ रहा है, बी। रोल नंबर कितना 2 है, मार्क्स कितना है 89। नेम ऑफ द स्टूडेंट थर्ड स्टूडेंट के लिए पूछा जा रहा है, सी। रोल नंबर 3, मार्क्स 67। ये चीज पूछा जा रहा है एक्चुअली फोर्थ स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो मैं न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड को इंसर्ट करूंगा वो न्यू स्टूडेंट के लिए ये अभी पूछा जा रहा है। एक्चुअली मैसेजिंग ठीक ठाक नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा और भी प्रिंट से अच्छे से मैसेज प्रॉम्प्ट करना था इसमें। अच्छा, न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड है एम, उसका रोल नंबर है से 18, मार्क्स है 90। तो देखो 1, रोल नंबर 1, नेम ए, फिर रोल नंबर 1 का मार्क्स है 78। नेक्स्ट रोल नंबर 18, नेम एम, मार्क्स 90। रोल नंबर 2 बी 89। रोल नंबर 3 सी 67। तो मेरा जो न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड था वो मेरा सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। सही से काम कर रहा है, सिर्फ थोड़ा सा प्रिंटफ अच्छे से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये आउटपुट स्क्रीन में भी अच्छे से दिखेगा। सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना स्टूडेंट्स? हाँ, एनी क्वेरी? Any doubt, students, up to this? This is very important. Okay, this is very important. So I will provide you the recording of this class. Please go through this class properly. Okay. अच्छा, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को सुन रहे हो? एग्जाम एग्जाम अच्छे से देना है, बहुत अच्छे से एग्जाम देना है। एग्जाम तो अच्छे से देना ही है। हाँ, अभी नोटिस दिया था वो, आज की दिया था वो। Okay, students, this is all for today. Thank you. Give your attendance and leave. Hmm. Hmm.